color F comma B, where F is, so whenever you want to write this syntax, you have to write its explanation also. Okay, color F comma B, where F is foreground color and B is background color. Okay, this way you have to proper syntax, right? Now the next command we discussed, that is line command. So what is the syntax of line? How many endpoints does the line have? कितने लाइन के पॉइंट्स होते हैं? स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट. देयर आर 2 पॉइंट्स ना, जहां से आप स्टार्ट करके जहां तक आप जा रहे हो, दैट मींस स्टार्टिंग पॉइंट टिल एंडिंग पॉइंट. सो फर्स्ट पॉइंट वी विल गिव यूजिंग द कोऑर्डिनेट x1 y1 देन x2 y2. ओके, आफ्टर दैट क्या देते हैं? दैट कलर, which color, in which color we want to draw our line, so that is a color. Okay, so COLOR. So this is the syntax of line. All right, so you will write here that x1 and y1 is the starting coordinates of the line, and x2 y2 is the what does this depict? You can note it down, the syntax. These are the starting coordinates of line, and x2 y2 is, these are ending coordinates. Okay, ending coordinates of line. यहां तक क्लियर है सबको? हमने कल इतना किया. Then we discussed the circle also. So the syntax for circle is circle, then you will give xy coordinate, then the radius and the outline color of the circle. So when you will give this syntax, you will write it like x and y are the coordinates. Okay, then or you can say this is the xy coordinates. हमारे कौन से हैं? Coordinates for the center location. और आप डायरेक्टली भी ये लिख सकते हो दैट एक्स वाई आर द सेंटर ऑफ द सर्कल. ओके, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल वेयर रेडियस इज, आर इज रेडियस एंड सी इज द आउटलाइन, और यू कैन से द बॉर्डर कलर. ऑल राइट, द सिंटैक्स ऑफ सर्कल. yes or no? The syntax of circle is clear? Any doubt? Okay, now the next statement is paint the syntax of paint x, y, जो भी आपका सर्कल का कोऑर्डिनेट रहेगा, then c that is for color, and then the border color. Okay, x and y is the center of the circle, right? Then c is the color that you want to fill, means this is a fill color. Okay, and border color means the outline border, outline का जो color रहेगा. All the syntax are clear? Be quick, you can note it down. Hurry up. Color statement, line statement, circle statement, paint statement. After that, we are having one more statement, that is the sound statements in QBasic. Sound statements in QBasic. कौन सी है sound statements? Number 1 beep, number 2 play. The two sound statements are beep and play. Beep is used to add sound, is used to add beep sound in the program. All right,
and the play statement next is the play statement that is used to generate musical notes. That is used to generate musical notes in the program. So these two are the sound statements. Okay, how you have to write it? When you are using the beep statement, simply you have to write the word beep. आपने directly beep लिख देना है. Okay, and when you are using the play statement, the syntax is play, and in the double quotes you have to type the string. यहाँ पे आपकी एक string value रहेगी. Now the string, what we can include in string? The string can have A to G alphabets and 4 to 64 values. A to G, 4 to 64 values. This thing is clear, bache? You are not writing. It's not given in the book. So two sound statements in QBasic are beep and play. Beep is used to generate the beep sound in the program, and the play is used to generate musical in the program. So what you can include in the play statement? Play, then string A to G, 4 to 64. So we have to form our combinations like play. So this is the syntax I have written. Okay, and this is the example. So see, play. अब आप कोई भी अपने अल्फाबेट्स के साथ वैल्यूज को ज्वाइन कर सकते हो. C2. Now make sure when you are using 4 to 64, that should be the multiple of 4. जब आपने वैल्यू देनी है, that should be multiple of 4. Okay, किसका मल्टीपल रहेगा? 4 का. The multiple of 4. All right. तो जब 4 का मल्टीपल दोगे तो आप कैसे दोगे 4 का मल्टीपल? Like C4, E16. कहां तक दे सकते हैं हम? G तक दे सकते हैं ना? Then A4 again, B64. Like this you have to give the strings. Okay, C8. So this way. So this will generate one music. So different combination of alphabets and values will generate a different kind of music. Okay, note it down. So let's do the practical. Done, बच्चे? Yes, दिवांग. मैम A to G मतलब मैम वो साउंड A की प्ले करेगा देन B की S से करेगा या फिर मतलब हमें जैसे पिछला टाइम? It's not the sound of A, B, C. It's a music. It's just a music. A की sound कुछ और होगी, B का music कुछ और होगा, C का कुछ और होगा. And by joining with the different value, that is the multiple of 4, it will generate some music. अभी हम करते हैं प्रैक्टिकल, आपको पता चलेगा. So just right now note it down all the syntax. Done. कर दो इसको मैं बंद अब. हो गया सबका? You are writing. Be quick. This is separate statement, color is separate, line is separate, and then circle. So yesterday we did line and circle too, but once again I'm going to show you the practical. हो गया यहाँ तक सबका? Okay, now let's come on to the QBasic. So I'm going to write all the statements once again. So starting with that, screen 12. So if I want to set the foreground and background color of my text, but I will use color statement for that.
in order to give the foreground color and background color. So say 3, 4. So 3 is different color and 4 will be the background color and 3 will be the foreground color. So whatsoever the content you will write inside the print statement, that is of same color. Okay. Few basic statements. Right. Now after that, line statement. So line statement is used to draw line, and with the help of the line statement, yesterday we drawn square and rectangle. So I hope the coordinates, how to set the coordinates, that is clear. जो भी आपका फर्स्ट लाइन का लास्ट पॉइंट होगा वो सेकंड लाइन का फर्स्ट कोऑर्डिनेट बनेगा. ओके, सो दिस इज माय फर्स्ट कोऑर्डिनेट, द फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट, देन the last point, and then you have to specify the color. So let's run this. So here the bracket is missing. Okay, ऊपर देखो प्रिंट का आउटपुट आ रहा है. आई हैव गिवन 2 कलर्स, foreground color and background color. Foreground color में आपका green color का text आ रहा है, the background color is red, and using the orange color I have drawn a line. Clear till now? Okay, now the next is, Harmeet, ask your doubt बच्चे in the chat box. Next is the circle statement. So for circle, what is the syntax? XY, that is the center of the circle. जहां से भी आप circle अपना draw करना चाहते हो. Let it be, I want to start it from 150, 200, and the radius of the circle, कितना आपने circle बड़ा बनाना है, so that depends upon the value of the radius. So that is 100, and the border color, the outline color of the circle. So let it be, we are taking a 7 here now. All right, clear? जितनी बड़ी वैल्यू दोगे रेडियस की उतना सर्कल आपका बड़ा बनेगा. यहां तक कोई डाउट किसी को? Is it clear? Now the next statement is the paint. I want to paint inside the circle. So when you are using the paint, you have to see the coordinates of the circle first. So like I have given here 150 by 200. तो आप कुछ भी दे सकते हो, चाहे सेम भी अगर आपने देना है. अगर आप स्लाइटली कम भी दोगे तो भी इट्स करेक्ट. डू यू हैव एनी डाउट? यू आर लुकिंग हियर एंड देयर ना, आपको नहीं समझ में आ रहा? Okay, so paint, then XY coordinate, then what we have to specify in the paint. अभी आपने सिंटेक्स लिखा है नोटबुक पे, देखो. आफ्टर द XY coordinates, पेंट स्टेटमेंट में क्या रहता है? कलर, द फिल कलर, जो कलर आप एक्चुअल में इसके अंदर फिल करना चाहते हो, है ना. सो वी कैन फिल एनी कलर. लेट इट बी, वी आर टेकिंग लाइट ब्लू, दैट इज कोड नंबर इज 9, एंड द बॉर्डर कलर शुड बी द सेम जो आपका सर्कल का है. अब सर्कल का क्या है? 7 था, सर्कल में मैंने कलर 7 लिया ना. सो सेम पेंट स्टेटमेंट में हम बॉर्डर कलर सेम रखेंगे, सो दैट कलर हमारा बाहर ना जाए. ओके, लाइट ब्लू कलर मैंने फिल किया है तो मेरा पेंट के साथ फिल हो रहा है. व्हाट आई हैव डन, सी सर्कल के जो सेंटर कोऑर्डिनेट्स थे 150 बाय 200, तो पेंट भी मैंने उसी सर्कल में ही करना है, तो मेरा कोऑर्डिनेट सेम ही रहेगा ना. जहां से मेरा सर्कल स्टार्ट हो रहा है उसी के अंदर अगर मुझे फिल करना है तो मेरा कोऑर्डिनेट सेम आ रहा है 150 बाय 200. आफ्टर दैट आई हैव टू pick a color that I want to fill inside the circle. So I have taken 9, that is the light blue color. Okay, then the border color. Now border color here is 7, क्योंकि circle का border भी हमारा 7 color था. That is slightly, I think, pinkish or grayish color. All right, any doubt? Any doubt in this? Clear है सबको? Paint, circle and line. These 3 statements are clear.
What is the name of the app? What we are doing, Harmeet? Which chapter we are doing? We are doing QBasic. So first day I told you during the introduction that all the work is to be done in QBasic. So download QBasic. Even I told you the websites for downloading it. आपको मैंने वेबसाइट्स भी बताई थी, softpedia.com, qbasic64.net, from where you have to download. So any doubt till now? Okay. So now the next is, let's make one program for printing your name. So for that, I'm taking the input statement first. Input, enter your name, then semicolon and $. Now you have to enter your name here. So now you want to print it. Print, my name is, अब मेरा नेम किसने पढ़ा है? इन $. ओके, इतना तो पता है ना, स्ट्रिंग वैल्यू ले रहे हैं तो $साइन लेंगे, अगर न्यूमेरिक वैल्यू ले रहे हैं तो नॉर्मल वेरिएबल लेंगे. ओके, so for that I have taken the string variable because the name is a string, it is a character. बच्चे, you get up, come here. So now the next two statements, beep. So simply you have to write a beep. जब भी आपने एक beep tone लेनी है, so just run this now. So firstly it is asking my name because I have applied the input statement, है ना? तो यहाँ पे हम अपना name डालेंगे. आ गया? beep की sound आई? वो क्यों आई? क्योंकि मैंने beep include किया program में, right? So means a single beep can be included in a program simply by writing a beep statement. Simply you have to write beep. Okay, so this will give you one beep. Now if you want 2 or 3 times want to depict this beep, so let it be my यहाँ पे my message is somewhat like this. Then once again I'm using a beep, then print again, then I'm writing hello, once again beep. तो कितनी बारी beep आना चाहिए? 3 times, because 3 times I've included beep, right? So look at the output. Firstly the name आ गया 3 times, 1 2 3, क्योंकि 3 बारी मैंने beep लगाया था. All right, any doubt? Any doubt? Now after the beep, let's use now play statement. So the syntax is play. Within the double quotes, you have to put a string, the combination of A to G and 4 to 64. Okay. So आप कोई भी multiples ले सकते हो. For example, A4, फिर मैंने ले लिया C8, B4, D20, E अगर नहीं भी लेना, means it's upon up to you how you are making the musical note by joining the different combinations of alphabets and values. All right, clear? तो मैंने ये अपनी string बना ली, अपना एक musical note बनाया है. So let's see now. Okay, पहले beep की 3 बारी आई है, उसके बाद play. अगर आपको नहीं क्लियर हुआ तो मैं यहाँ पे beep अभी निकाल देती हूँ, so that आपको सिर्फ play का पता चलेगा. So this way you can make your own musical notes simply by इसको भी हम निकाल देते हैं. Now simply I have printed the message slash hello and then stars and then one musical note. To see. ये जो भी म्यूजिक बने हैं that is according to the combinations. जितने combinations आप include करोगे, जितनी बड़ी string रखोगे, उतना आपका bigger आपका बनता जाएगा musical note. Okay, so you can include the values like this. जितना मर्जी increase करते जाओ. So see,
longer version from the previous one क्योंकि मैंने string increase कर दी. Okay, the play statement is clear. Any doubt? So the chapter is finished. Any doubt in any of the command from the chapter? सबको clear है chapter? Okay, now coming on to the exercises. Come to the question number D. D and E part is to be done on the fair notebooks. From page number 54, page number 54, D and E part. Both the parts are to be done on fair notebook. करें? Okay. What is the syntax for the following statements? तो screen का syntax क्या होता है? The syntax for the screen statement is simply you will write screen and then mode number. Okay, screen, then mode parameter. It's given in the book, page number 48. So syntax is screen, mode, parameter. All right. Any doubt? Next, color. So color का यहाँ पे मैंने already syntax दिया हुआ है. Look here, the first box. उधर देखो screen पे. Color. Color F, B. Then you have to write it down that F means foreground color, B means background color. Okay, पूरा complete syntax आप दोगे. Clear? First two are clear. Third is line. So line का syntax यहाँ पे देखो, after the color statement I have given. Already you people have noted down. So this is the syntax of the line. Circle. Circle का भी उसके नीचे दिया हुआ है. Circle X, Y are color, where X and Y is the center of the circle, R is the radius of circle, and C is the border color. Write it once again. You can clearly write it down. आप description में क्या दोगे? That X, Y are the center coordinate of circle. R is radius of circle, and C is border color of the circle. Clear? So this is the description of the circle. All right? Yes or no? Clear? Next is the paint. So paint का syntax it's given here, X, Y, C and border color, where X and Y is the center of the circle. That means center coordinate. You will write center coordinate. The word is center coordinate of circle. C is the fill color that you want to fill inside the object. जो आपने object के अंदर fill करना. Okay. Border color means simply the outline border. All right. Border color में क्या दोगे? The outline color of the border or the border color of a object. Okay, so D part is to be done on fair notebook. Now coming on to the E part, what is the use of input statement? What is the use of input statement? Yes. What is the use of input statement? Yes, sir. The input statement is used to take the data from the user. Right. So input statement is used to take input or data from the user. Right. After that, you have to write down the syntax of input also. So syntax you can note it down. Statement का use देके आपने उसका syntax देना है. The syntax is input, message, semicolon और यहाँ पे जो भी आपका variable name रहेगा. For example, input, enter your age और आप यहाँ पे age को enter कर दो. First one is syntax and then example. All right, clear? What do you mean by constant? Mention its types.
So the constants are the values that do not change during the program execution. The two types of constants are numeric constants, string constants. Change करो book में, character constant नहीं लिखना, string constant. Come to page number 46. Come to page number 46. Constants are the values that do not change during the program execution. Types of constants are numeric constants, string constant. Numeric constant, string constant. Okay? Clear? आपको clear है? Define variables. Ma'am, can I? हाँ जी बच्चे. A variable refers to a name of data storage location in the computer memory. Right. Page number 47. A variable refers to the name of data storage location in computer memory. It holds a value assigned by the user. First two lines. It holds a value assigned by the user. A variable refers to a name of data storage location in computer memory. It holds a value assigned by the user. Clear? Got the answer? Yes, ma'am. Any doubt? No, ma'am. What do you mean by resolution? All online students are giving answers. What happened to you people? Yes. Very good. So page number 48 पे no more के अंदर दिया हुआ है. The amount of pixels per unit area on the screen is called resolution. Clear हो गया बच्चे आपको? This boy? Clear? Now come on to the sixth question first. What is screen mode? What is screen mode? हाँ जी. What is screen mode? Screen mode tells the resolution and the different number of colors supported by that screen. Write it down. Screen mode tells the resolution. Screen mode tells the resolution and the different number of colors supported by the screen. Supported by a particular screen. Screen mode tells the resolution and different number of colors supported by a particular screen. For example, page number 47 से you can give the example. Screen 1 resolution कितना है? 320 by 200. Number of colors supported 4. एक screen 1 का दे दो, एक screen 13 का दे दो. 2 screens. Screen 1 and screen 13. और screen 12 you can get क्योंकि हम already programming में screen 12 हम use कर रहे हैं. So we can give the example of screen 12 also. All right? Clear? Ma'am, I have a doubt. Yes. हम जैसे इधर स्क्रीन मोड्स दिए हुए हैं, ये हमें पेपर में पूछे जा सकते हैं और इसके रेजोल्यूशन और कलर्स No, पूछे. बच्चे, no, we do not have to learn these. क्योंकि हमने इसको practically करना है. This is not for the memorization purpose. हाँ जी मिता. और मैम कलर स्टेटमेंट से. What is screen mode? Screen mode tells the resolution and the number of different colors supported by a particular screen. हाँ जी बच्चे, आप कलर का क्या पूछ रहे हो? हम कलर स्टेटमेंट के पूछे जा सकते हैं, जैसे इधर दिए हुए कलर वैल्यू और कलर नेम. No, again no values to be remembered. ठीक है, जब आपने प्रैक्टिकली करना है, just you have to look at the color code, but we do not have to learn it practically. Okay, ma'am. Okay, so we are left with one question, that is fifth part. How we can draw a triangle? So we can draw a triangle using line statement.
हाउ वी कैन ड्रॉ ट्राइंगल, हम ट्राइंगल भी तो लाइंस के साथ ही ज्वाइन करके बनाएंगे. सो वी कैन ड्रॉ अ ट्राइंगल यूजिंग लाइन स्टेटमेंट. ओके, now they are asking explain with the example, so you have to write a code here with the help of which you will draw a triangle. So can you able to do? आप लाइन के साथ क्या बनाया हमने कल, रेक्टेंगल. Now the same rectangle and square, so the by using the same line statements we will draw a triangle. तो कैसे बनाओगे? 3 times हमें यूज करनी पड़ेंगी लाइन स्टेटमेंट, राइट. So firstly you will take line, for example if I am taking 100 by 100, अगर मेरे को स्ट्रेट लाइन बनानी है तो मेरा सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या x इंक्रीज हो रहा है, y मेरा सेम रह रहा है. So I am taking 300, 100 and then the line color as 4. तो ये मेरी बेस वाली लाइन बन गई. ओके, आफ्टर दैट आई हैव टू मूव. अब मुझे सेंटर में आना पड़ेगा ना, सेंटर पॉइंट पे आना पड़ेगा. तो क्या लगाएंगे, स्टार्टिंग कहां से करेंगे हम, अब कहां से स्टार्ट करेंगे. अगर आपने 300 से करना है, अगर आपने फर्स्ट पॉइंट से लेना है तो आप वहां से भी ले सकते हो. अगर डाउनवर्ड बना रहे हो तो लास्ट पॉइंट उठाओगे, अगर अपवर्ड बना रहे हो तो फर्स्ट पॉइंट उठाओगे. ओके, सो वी हैव टू गो इन द मिडल नाउ. मिडल में जाएंगे, कितना मिडल आ रहा है, एक्स एक्सिस 100 से 300 पे जा रहे थे, तो यू कैन टेक अ मिडल ऑफ 150. 300 का 150 मिडल आ रहा है ना. ओके, देन व्हाट विल बी द y कोऑर्डिनेट हियर. y कोऑर्डिनेट तो आपका वही रह रहा है, कॉलम तो वही रहेगा. बच्चे प्लीज डोंट स्पीक इन बिटवीन. देन यू हैव टू कम डाउन नाउ. तो जब वापिस आ रहे हैं तो कहां से स्टार्ट करेंगे, 150, 100 माइनस कहां तक जा रहे हैं, लास्ट पॉइंट क्या था, 300 by 100. ओके, so let's play this. Just look at the coding of triangle. ये पहले बीप लगा हुआ था इसकी वजह से. ओके, सो आई हैव टू कट दिस थिंग एंड लाइन लगानी है तो कौन सा स्क्रीन मोड लेना पड़ेगा, स्क्रीन तो हमने इंक्लूड ही नहीं की, दैट इज स्क्रीन 12, राइट. तो दिस इज अ सिंपल लाइन. अब देखो बाकी अभी क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं पे कोई, सो द सिस्टम इज अगेन हैंग. आपको पता चल गया ना जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, सेंटर में ट्राइंगल क्या होता है, मिड पॉइंट पे जाके मीट करेगा, मींस व्हाटएवर द कोऑर्डिनेट्स यू हैव टेकन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंडिंग पॉइंट, तो उसका इन बिटवीन आपने मिड पॉइंट लेना. मिड पॉइंट से फर्स्ट पॉइंट तक ज्वाइन करना है और मिड पॉइंट से लास्ट पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट आपको पहली लाइन से मिल जाएंगे. ओके, so these D and E part is to be done on the fair notebook. All right, and rest of the exercises we will cover in the next class. Okay.